Hello everyone. So welcome back to my channel and to the very first episode of the journey in my heart, Hriday Ka Safar, Hriday Se, and I welcome you with this bright sun which is imparting so much brightness for all of us. Maybe it is a good signal. तो मेरा ये मानना है कि जब भी लाइफ में ना न्यू होप सर्च कर रहे हों हम या नई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है, तो आई थिंक विजिटिंग न्यू प्लेसेस, मीटिंग न्यू पीपल इज़ द बेस्ट वे। तो बस यही सोच के साथ मैं पहुंच गई महाराजा रंजीत सिंह पैनोरमा में, जो कि अमृतसर में कंपनी बाग स्थित है। सो बाहर से तो बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग लग रही थी ये। सो आई थॉट कि क्यों ना उन लोगों को बताया जाए जिन लोगों को इस जगह के बारे में शायद नहीं पता हो। तो लेट्स एक्सप्लोर एवरीथिंग अराउंड अस विद न्यू होप, विद न्यू लर्निंग्स एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ कोर्स। तो ये ना टिकट काउंटर था बिल्कुल एंट्री में, जो पहले जब ये स्टार्ट हुआ था पैनोरमा तब था यहाँ पर टिकट काउंटर, लेकिन अब तो ये ना यूज़ नहीं होता है गेस। राइट साइड पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टैचू है। आई रियली आइडलाइज हिम। आई थिंक इनका मैं सोच रही थी कि इनका स्टैचू यहाँ पर, तो देन आई रियलाइज्ड, मैंने एनालाइज किया कि हो सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह जी के जो उनकी प्रिंसिपल्स थे और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के प्रिंसिपल्स थे, ये काफ़ी पैरेलल थे। जैसे इक्वालिटी, दोनों इक्वालिटी में बिलीव करते थे और दोनों काइंड नेचर के थे। तो बस ये मेरा एनालिसिस, मैंने ऐसे सोचा कि हाँ, मे बी उनका स्टैचू इसलिए होगा यहाँ पर। उसके बाद ये मैं जैसे ही आगे प्रोसीड कर रही थी तो लेफ़्ट साइड पे ये बहुत ही प्यारा सा स्टैचू था जिसमें कोई एक सिपाही घोड़े पे सवार है। सो बहुत ही रॉयल लुक दे रहा था ये, और चारों तरफ ग्रीनरी देखकर ना वैसे ही मन बहुत खुश हो रहा था। मध्यम सी धूप थी और एवरीथिंग अराउंड वाज जस्ट ग्रीन। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल ह्यूज ट्री। इसकी ब्रांचेस हमें ये बताती हैं इट सिग्निफाइज ट्रांसफॉर्मेशन, और एट द सेम टाइम ये भी हमें एक टीचिंग देता है कि जितनी मर्जी हाइट पर आप पहुंच जाएं, लेकिन आपको रूट्स के साथ जुड़े रहना है। और ये जो एकदम शांति के माहौल में जो रसलिंग ऑफ लीव्स हम सुनते हैं, कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, जब एकदम सन्नाटा हो और सिर्फ पत्तों की आवाज़ आ रही हो, मध्यम से धूप हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, वो जो फीलिंग है ना, वो इट्स डिफरेंट। तो या हाँ, एवरीथिंग अराउंड वाज एक्चुअली वेरी मेस्मराइजिंग। आई लव दीज प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो और वो एक नेचर के साथ बात करने का वहाँ मौका मिले। एंड दिस इज़ द एंट्री टू महाराजा रंजीत सिंह पैनोरमा। और बस यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल टिकट थी, आई थिंक ₹10 पर पर्सन। तो या, और जैसे ही आप एंटर करेंगे इनसाइड, आप देखेंगे कि वॉल्स पे ना बहुत ही ह्यूज पेंटिंग्स हैं जो कि कोई ना कोई उस टाइम की कोई एपिसोड को डिपिक्ट कर रही हैं, और नीचे स्टोरी भी उसकी लिखी हुई है। ये फोटो जो है ये महाराजा रंजीत सिंह जब वो अपने फेवरेट हॉर्सेस पे अपने ऑफिसर्स के साथ ट्रैवल करते थे ਜਦੋਂ वो, so this is one of the painting. Then we have this second one. Okay, so this portrait of Maharaja is attributed to, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਮੈਰੀ ਡੀ ਟੌਰਨੇਮਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 1831 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। Oh, nice. This shows the secular and kind nature of Maharaja, that once a calligraphist was unable to sell at a proper price his lifetime's work, a gold-plated manuscript of Holy Quran, Maharaja called for him and purchased the copy without bargaining the price. So he later offered the Holy Quran to Fakir Azizuddin as a token of his friendship. It reveals Maharaja Ranjit Singh as a patron of arts and also his respect for other religions. Maharaja Ranjit Singh is purchasing the gold-plated manuscript of the Holy Quran from the calligraphist. As you can see that he is purchasing it. इस पेंटिंग का जो इन्होंने कैप्शन दिता है, that is the sweet stone.
written once Maharaja Ranjit Singh riding over an elephant was passing through the streets of Lahore city, and all of a sudden a small stone hit him. The soldiers accompanying Maharaja ran all around and brought some boys in front of Maharaja. They had thrown the stone to hit a bear tree for the sweet fruits, but it missed the target and hit the Maharaja. When Maharaja came to know about this from the boys, he laughed and instead of punishment, expressed affection and kindness for the children. He gave coins of gold and sent them back happily. So he was a kind-hearted Raja who, in spite of getting hurt by a stone, he gave them some gifts in the form of gold coins and all. This is Diorama Hall. Okay. So here it is, the king as a child. So I would like this to be focused. Maharaja Ranjit Singh was born in Gujranwala, now in Pakistan, in 1780 to Maha Singh and Raj Kaur, commonly known as Mai Malwan. Maha Singh, the chieftain of Sukarchakya Misl, is seen holding his court during daytime in a highly decorated baradari in front of ancestral house. Baradari means outhouse. Okay. Baby Budh Singh, early name of Maharaja Ranjit Singh, can be seen crawling on the decorated floor, being looked after by the attendant. Okay. So here we have the marriage ceremony being shown by of Maharaja Ranjit Singh ji. So the marriage of Maharaja Ranjit Singh with Mehtab Kaur, granddaughter of Kanhaiya Misl chief, is being solemnized in a large decorated baradari. So this shows capture of the Zamzama 1802. So I'll read it in Punjabi. 1802 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਪੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਖੋ ਲਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। Okay, so this is Zamzama top. Fine. And this one, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਦਿ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੇਟਾ 1830 ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ। 1830 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੈਨੋਰਮਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਟੈਂਪਲ ਐਟ ਕਾਂਗਰਾ। Okay. Maharaja Ranjit Singh was too secular in character as he showcased reverence not only to Sikh faith but also to other religions also. By visiting shrines like the Jwalamukhi temple after the success of Afghan war, he gilded the roof of Jwalamukhi temple as a thanksgiving. Gold plating of roof of the Jwalamukhi temple at Kangra is in progress under the supervision of Maharaja Ranjit Singh. Maharaja with his ministers and associates is giving instructions to the master craftsmen in तो पेनोरमा में एंटर करते ही ना ये एक बैटल फील्ड बनाई हुई थी और एग्जैक्टली वैसे ही साउंड्स ऑफ बैटल, वो तलवारों की आवाज़, वो घोड़ों की आवाज़, वैसा ही एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, वैसा साउंड चल रहा था। और बाकी ये सब एपिसोड्स ऑफ बैटल्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वो सब डिपिक्ट कर रहे थे। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। And just show the people also standing over there.
सो पनोरमा से मैं बाहर जा ही रही थी, तो जैसे ही मैं बाहर पहुंची, देन अगेन I saw a painting which caught my attention. It was beautiful again. So, Maharaja Ranjit Singh Panorama is developed by National Council of Science Museums, NCSM, Ministry of Culture, Government of India. तो मतलब ये सारा ਜਿਹੜਾ ਪੈਨੋਰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ is taking care of this place and definitely state government is also now taking care, so it is built by central government but taken care by state government. Maharaja, the touchstone. Okay, Maharaja Ranjit Singh was considered by his subjects as Paras, the touchstone which can transform iron to gold when touched. An old woman tried to transform her dirty iron pan into gold by the Maharaja's mere touch because it would end her misery. So the benevolent Maharaja halts while coming in procession along a main thoroughfare on horseback and ordered his officials to give gold equivalent to the weight of the pan instead of punishing her for spoiling the royal dress. So I think with all the pictures, with all the sceneries, we have understood one thing, that Maharaja Ranjit Singh was a secular ruler. He was a kind-hearted person, and above all, he had humanity in himself, and he was always ready to help people. So I think such ruler can build a great empire, definitely. Number 3, Dharma Hall 3. Okay, so here it is Roper Treaty, in which Britishers were also involved. So let's read this. Maharaja Ranjit Singh, riding on a elephant back, meets William Bentinck, the Governor General of India, at Roper on the bank of river Satluj on 26 October 1831. Maharaja is followed by a battery of armed men with artillery at the far end. A good number of royal canopies and tents of the British camp with senior armed officers can be found on duty. The Maharaja took his opportunity to display the prosperity and power of the Kingdom of Lahore. So as you can see, so we have another, which is leadership from the front, that is Morche di Agwai. So I'll read it in Punjabi this time. ਸਾਹਸਤ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਅਫਗਾਨ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸੈਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠਿਲ ਪਈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਟਕ ਕਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। As you can see, this is the Atak river. Here we have, okay, so this is very important, especially for the Punjab culture, and as well as in the history of India, it has been, this incident has been something very important. So we will read here. Acquisition of Kohinoor 1814. Maharaja Ranjit Singh, right from his boyhood, had an ambition to acquire the Kohinoor diamond. It was at that time in possession of Shah Shuja, the Durrani monarch, who was later on defeated and captured by Ata Muhammad Khan, the governor of Kashmir. Ranjit Singh provided asylum to his wife and released Shah Shuja from Kashmir in lieu of Kohinoor. Okay, so Maharaja Ranjit Singh in royal dress is sitting on a decorative chair at the center of a palace hall. Fakir Azizuddin, Jamadar Kushal Singh and Pai Gurbaksh Singh are standing very close to Maharaja. Shah Shuja in bright royal cloth is offering the uncut Kohinoor on a velvet casket to the Maharaja. Here we have modernization of army. 1830. Maharaja Ranjit Singh was a great general who wanted to modernize his army after seeing the superiority of British troops. He inducted several Europeans to felicitate this, J.F. Allard and J.B. Venture. The two French officers who were inducted by Maharaja Ranjit Singh for modernizing his army had served Napoleon in his campaigns. They are seen inspecting organized infantry on one side and cavalry on the other.
all personnel are in right army outfit. Many of them are carrying long arm guns. इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं. आई थिंक इन सिविल सर्विसेज में भी आया था, JF Allard और JB वेंचर के बारे में. दे वर टू फ्रेंच ऑफिसर्स हु वर इंडक्टेड बाय महाराजा रणजीत सिंह. सो वी कैन जस्ट सी दिस. मेरा तो ये मानना है कि हर जगह, हर सिचुएशन और हर इंसान हमें बहुत कुछ सिखाता है. जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह जी की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग. तो एक और बात है कि जैसे हमारे स्टेट के कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह जी के ऊपर तो वैसे ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो इस जगह को विज़िट करने से काफ़ी स्टूडेंट्स का भी भला हो सकता है. So this was our first episode of Journey in My Heart. So guys, this is a panorama in the Company Bagh area. I think very beautifully done under the Ministry of Culture, Government of India. It has been wonderfully planned. But some things that really need attention is first, little cleaning of the area. I think it is necessary. Maintenance thoda ja cut hai, and we need more and more influx of tourists over here. And in fact, I request all the localites also to please come here. This is a one. Amritsar is actually a holy city. It's a beautiful city. We have so many old buildings over here. ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਨੋਰਮਾ 'ਚ ਆਓ. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, who was a great leader of, I mean, who was a great ruler of Punjab, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. So it's my request कि ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਓ and ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ enjoy ਕਰੋ. And this greenery is wonderful. Thank you. See you in the next episode.